Good evening, friends. Welcome back to my YouTube channel, Next Gen Learning. Today's video, we are going to discuss Chapter 5, Industries from Grade 8. As you all know, we are making series on graded geography. So today's video is also related to my previous videos. You will get the PDF link again in the description box. Feedback form is also there. If you have any query or you're not understood any topic or any particular thing, so you can contact me from there, or you can also fill the comment box. So let us start Chapter 5, Industries. Industries grade 8 chapter 5. Here you can see an image of a tree and one quote. That quote is journey begins. Paper made, recycle. It simply try to shows that पेपर कहाँ से बनता है, पेपर की शुरुआत कहाँ से होती है, पेड़ से, और उसके बाद उसको फिर रिसाइकल करके दोबारा से हम लोग पेपर बनाते हैं, so that हम लोग दोबारा एक पेड़ को कटने से बचा सके. पेपर बेसिकली पेपर इंडस्ट्री में बनता है. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of the trees was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands. कभी सोचा है हाथ में जो कॉपी है जिसमें आप नोट्स बनाते हो, वो नोटबुक कहाँ से आती है? वो नोटबुक भी पेड़ से आती है. कैसे? हम जो लोग हैं जो पेड़ काटते हैं वो लकड़ी को जो है फैक्ट्रीज में भेजते हैं, वहां पे उसको वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ केमिकल्स वगैरह उसमें ऐड किए जाते हैं, इंक वगैरह दी जाती है और उस पर लाइंस बनाई जाती है. जैसे कि आपकी इंग्लिश नोटबुक, मैथ्स नोटबुक, हिंदी नोटबुक डिफरेंट होती है ना. प्राइमरी क्लासेस में तो थी, अभी तो आप सब एक ही सिंगल लाइन नोटबुक्स में नोट्स बनाते हो. तो इस तरीके से हमारा पेपर बनता है और उन सभी पेपर को एक बोल सकते हो बाइंड किया जाता है एक पर्टिकुलर नोटबुक फॉर्म में, देन उसको मार्केट में बेचा जाता है और आपके हाथ में नोटबुक आती है. दे डोंट वेस्ट पेपर. Secondary activities. Industry basically is related to the secondary activity. If you remember, I discussed agriculture is related to the primary activity. Main first source of income हमारा agriculture है. National income की बात कर रही हूँ मैं. Second जो है हमारा industries है. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent two stages of a manufacturing process. Paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. पेपर पेपर ही रहेगा जब तक वो नोटबुक में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. खाली पेपर अगर आप मार्केट में लेने जाओ 25 पैसे में तो पहले मिलता था, अभी तो वो भी नहीं मिलता है. पर जब वो एक नोटबुक फॉर्म में होता है तो 25 रुपीज 50 रुपीज में आते हैं. कॉटन दिए की बाती लेने जाओ, 1 रुपए का पैकेट 10 रुपए का पैकेट ऐसे मिलते हैं. बट अगर उसी कॉटन का दुपट्टा या सूट लेने जाओ, साड़ी लेने जाओ, 500 600 2000 रेंज का भी पड़ता है. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, एक सिंपल कॉटन के, एक सिंपल पेपर की. इन दिस वे फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम. तो जो फाइनल प्रोडक्ट है, खाली पेपर की वैल्यू नहीं बट नोटबुक की वैल्यू है, खाली कॉटन की वैल्यू नहीं बट कॉटन से बने हुए टी शर्ट, सूट, दुपट्टा, साड़ी, इसकी वैल्यू है. तो हम उस फाइनल प्रोडक्ट को जो वैल्यू देते हैं वो हम इंडस्ट्रीज के थ्रू देते हैं. Industries refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. Thus, we have iron and steel industry, coal mining industry, and tourism industry. Industries को तीन कैटेगरीज के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं: रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसका नाम ही बता रहा है, वो इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू बनती है. जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स, ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री.
Mineral based industry, again its name clear that those industries which are basically depends on minerals. Iron made from iron ore is a product of mineral based industry, used as raw material for manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches. Marine based industry, its name again tells those industries which are basically using seafood or sea animals as their raw material and use them for manufacturing fish oil और processing seafoods also. Forest based industry जो कि forest products से बनती है, जैसे कि वुड से आपका पेपर इंडस्ट्री हो गया, हर्ब्स और मेडिसिन से आपके आयुर्वेदा मेडिसिन, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज बन जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर, बिल्डिंग लकड़ी से. आप इस इमेज में देख सकते हो कि आप जो मखाना खाते हो, गॉर्गन नट जो खाते हो, उसको बनाने का तरीका क्या है. फर्स्ट पिक्चर में आप देखो, आपने कुछ मखाना लिए. सेकंड में आपने उसको छाटा, विच वन इज गुड विच वन इज बैड. थर्ड में आपने उसको फैक्ट्री मशीन में देके उसको एक बार ग्रीस किया, ऑयल दिया, सॉल्ट दिया, समथिंग लाइक दैट. एंड इन फोर्थ पिक्चर मैन इज पैकिंग ऑल दिस मखानाज इन अ पैकेट. तो ये सब हमारा जो है प्रोसेस है, प्रोसीजर है, स्टेप्स है इंडस्ट्रीज में जो हम लोग करते हैं, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में. साइज, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. कितना पैसा आप लगा रहे हो उसके हिसाब से आपके इंडस्ट्रीज का साइज डिसाइड किया जाता है. बेसिकली यहाँ पे हम कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं. कॉटेज इंडस्ट्री जो फैमिली मेंबर्स मिलकर कर लेते हैं, 3-4 फैमिली के बड़े मेंबर्स मिलते हैं और एक इंडस्ट्री सेट कर लेते हैं. लाइक चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोल दी, सॉस बनाने का कर दिया, या पॉटरी फैक्ट्रीज कर दी, या बास्केट वीविंग किया, हैंडीक्राफ्ट्स किया. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप कुछ थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो और टेक्नोलॉजी भी उसमें बहुत कम यूज होती है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, गुड टेक्नोलॉजी चाहिए. Silk weaving and food processing industries are examples of small scale industry. Production of automobiles and heavy machineries are example of large scale industries. Industries again can be classified into private sector, public sector, joint sector and cooperative sector. Private sector industries owned and operated by individual or a group of individuals. Individual person जो industry खोलता है that is known as प्राइवेट इंडस्ट्री, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक इंडस्ट्री खोल दी, प्राइवेट इंडस्ट्री, विद अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. उसको रेशियो में कर लेते, 50-50 का, 60-40 का, 40-60 का, 40-40-20 का. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट के मोनोपोली आ जाती है. गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज होती है, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. आपके पास गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सिमिलरली 9 कंपनीज हैं और इन्हें हम नवरत्न कंपनीज बोलते हैं. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या आ जाता है, या तो स्टेट और इंडिविजुअल की पार्टनरशिप होती है, या दो डिफरेंट लोगों का पार्टनरशिप हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री. Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw material. Cooperative sector industries में जो producer है और raw material के जो supplier हैं, इनके joint ventures से आप बोल सकते हो, इनके joint इनके combining से जो industries बनती है उन्हें cooperative sector बोलते हैं. For example, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. वर्गीस क्यूरी व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले थे. You know the father of white revolution, Dr. वर्गीस क्यूरी. उन्होंने ही अमूल को भी लॉन्च किया. इसमें क्या था, फीमेल्स जो गांव की घर की ही औरतें हैं, वो सब मिल के गाय से दूध लेके आना, देन उसको प्रोसेस करना, उसमें से मिल्क, बटर, चीज ये सब बनाना, मार्केट में सेल करना, ये काम करते थे. तो ये एग्जांपल हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर का. अनदर एग्जांपल यहाँ पर है सुधा डेयरी. इट्स एन आल्सो एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर. एक इंडस्ट्री सेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए, उसके साथ पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लेबर, कैपिटल, मार्केट एंड वाटर. आप इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हो अपने इंडस्ट्रीज में, उसके लिए आपको पावर चाहिए ना. मशीन चलाने के लिए आपको पावर चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका एक पावर हो गया. या आप आजकल तो सोलर एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं. लैंड चाहिए इंडस्ट्री को बनाने के लिए, सेट करने के लिए.
ट्रांसपोर्ट, आपका माल जो बन गया है उसे मार्केट में बेचने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, या कच्चा माल आप कहीं से लेके आ रहे हो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। कम्युनिकेशन, आजकल तो इंटरनेट है, ईमेल भेजा कम्युनिकेशन हो गया। पहले फोन, लेटर, मेल तो नहीं था, फोन, लेटर या टेलीग्राम टाइप से हम लोग कम्युनिकेशन करते थे, वो जो बहुत टाइम टेकिंग था। लेबर चाहिए काम करने के लिए, कैपिटल ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा नहीं तो इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी। मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए, और पानी क्लीनिंग के लिए खासकर, और वाटर जो है एक एसेंशियल आप बोल सकते हो, रॉ मटेरियल ही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इनपुट है हम बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। इंडस्ट्रीज में हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में क्या आ जाते हैं, जो पॉइंट्स हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किए, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। Process include wide range of activities that convert raw material into finished product. रॉ मटेरियल से, कॉटन के टुकड़े से उसको शर्ट में बनाने के लिए जो आपने प्रोसेस किया, जो भी स्टेप्स आपने उसमें इंक्लूड किए, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग इन अ फैक्ट्री। आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट हो जाए जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास है, जो शर्ट बनकर उस कॉटन से आई है, जब मैं उस शर्ट को मार्केट में बेचूंगी मुझे उससे पैसे मिलेंगे, तो आउटपुट हो जाता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट। In case of textile industry, the input may be cotton, human labor, factory and transport cost. Processes include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. Output is the shirt you wear. Industrial region, please learn all these regions. Industrial regions emerge when a number of industries located close to each other and share the benefit of their closeness. Industrial region हो जाते हैं जब industries आस पास ही कहीं पर लगी हो, एक दूसरे के उनकी क्लोजनेस की वजह से वो एक दूसरे के साथ कच्चा माल ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं, एनीथिंग दे कैन डू। Major industrial region of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. Major industrial region tends to be located in the temperate areas, near seaports and especially near coal fields. India has several industrial regions like Mumbai-Pune cluster, Bangalore Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad Baroda region, Chota Nagpur Industrial Belt, Visakhapatnam Guntur Belt, Gurgaon, Delhi, Meerut region, and the Kollam Thiruvananthapuram Industrial Cluster. Here I just want to add, Gurgaon is now known as Gurugram, so make sure whenever you are writing in the paper, you should write Gurugram. Industrial disaster. It's very important. Industrial disaster basically happens in the chemical factories. Here we are doing example of a Bhopal gas tragedy which was happened on 3rd December 1984. In this highly poisonous gas methyl acetonite along with hydrogen cyanide and some other reaction products were leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. Here you should know the name of the gases and the name of the factory. Official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders, etc. भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट एंड हाइड्रोजन साइनाइड। इस गैस के लीक होने से वहां पे 3,598 लोगों की डेथ हुई। आज भी इस गैस का असर वहां पे है, आज भी वहां के कई लोग हैं जो जन्म के टाइम से या तो ब्लाइंड होते हैं या उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, समथिंग लाइक दैट। Another incident here, they are talking about factory of China, Gao Kuangshan in China, where 243 people died, 9,000 were injured, and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin, and lungs from the gas. गैस लीक हुई, बहुत सारे लोग जो है मरे, जो नहीं भाग पाए, अपने आप को नहीं बचा सके, उनके बॉडी के कुछ पार्ट जल गए जैसे आई, स्किन और लंग्स। इंडिया में रिसेंटली आपके पास एग्जांपल है, अप्रैल में या मई में, आई थिंक अप्रैल इज मंथ, व्हेन देयर वाज अ गैस लीक इन वाइजैक, स्टेराइल गैस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, उस लोकल रीजन के लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दे वर नॉट एबल टू ब्रीथ इट प्रॉपर्ली, वो सब स्टार्ट हुआ था। तो basically this type of things happens from such factories who are using chemicals at a large rate.
Okay, to avoid such incidents, each and every government from different parts of the world has adopted some risk reduction measures. Let us see those measures. They separated residential area and industrial area. They said where human beings are settled down, industry should not be there. Okay, residential area and industrial area should not together. If people are staying near industrial area, especially the laborers and the employees, okay, so they should know about the amount of storage of toxins and hazardous substance. Fire warning and fighting system should be improved. Storage capacity of toxic substance should be limited. Pollution dispersion qualities in the industries should also be improved. Distribution of major industries. This again you have to learn. World major industries are iron and steel industry, textile industry, and information technology industry. Iron and steel and textile industry are the older industry, while information technology is an emerging industry. IT sector is a newest industry. At least since last 10 years in India, it is also booming. The countries in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan, and Russia. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. Major hubs of information technology industries are Silicon Valley of Central California and Bangalore region of India. That's why Bangalore is also known as Silicon Valley of India. Iron and steel region in India. Sorry, iron and steel industry, let us discuss it right now. Then we will study the major industrial region of India. Like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs. बाकी इंडस्ट्रीज की तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी हमारे पास इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industry. आयरन ओर से आप आयरन बनाते हो, वो आयरन दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है. ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज के लिए आयरन एक रॉ मटेरियल है. Inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone, along with labor, capital, site and other infrastructure. Process of converting iron ore into steel involves many stages. Raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. Smelting means that level where we do not melt, we stop beyond the melting point. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. We will understand this process with one diagram in my next slides. Here you put raw material in blast furnace, okay, where it goes to the process of smelting, where it reaches the level of smelting, not melting. And when it cools down, it comes in a form of a steel. Smelting we already explained that it is the process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point. पिघलने के पॉइंट से पिघलने नहीं देना है, पिघलने के एक स्टेप पीछे ही हम उसको रोक देंगे. That is known as smelting. और ये आपके सामने डायग्राम है. You can see the blast furnace. Here they put all the limestone and coke, iron ore. Then hot air is coming out from here. You can see this yellow arrow. Okay, and from here, molten iron goes here, slag goes here. We stopped at the smelting point, and steel we can produce steel from this process. Steel is tough and it can be easily be shaped. Steel tough है but हम इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं. इसमें हम एल्युमिनियम, निकल और कॉपर मिलाते हैं और इसके हार्डनेस, टफनेस, एबिलिटी जो है ताकि उसको जंग ना लगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं. स्टील इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machineries of these metals. ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं आयरन और स्टील का ही इस्तेमाल करते हैं. Ships made, train, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. घर पे जो सुई मम्मी बोलती है धागा डाल दे या सेफ्टी पिन, वो भी स्टील से बनी है. Oil wells are drilled with steel machinery. इफ यू रिमेम्बर माइनिंग में हमने ड्रिल एक्टिविटी भी पढ़ा था, तो ड्रिल के लिए जो चीजें यूज होती है उसमें भी स्टील होता है. स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील.
Large buildings have steel framework. Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. 1800 से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहीं लगती थी जहां पे पास में आपको रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मिस आयरन और पावर सप्लाई और चलता बहता पानी आपको आसानी से मिलता है. Later, ideal location for industry was near coal fields and close to canals and railways. उसके बाद आइडियल लोकेशन हमारे लिए क्या हो गया, कोल फील्ड्स के पास में, ताकि कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, और कैनल्स और रेलवेज के पास. कैनल से आप साफ सफाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो आपके पानी मिल रही है सफाई के लिए, कपड़ों में डाई करने के लिए, और रेलवेज के पास ताकि आप ट्रांसपोर्ट कर सके. After 1950, iron and steel industry began to be located in large areas of flat and near seaports. 1950 के बाद ज़्यादातर सी पोर्ट्स के पास ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हुई, सो दैट आप उस अपने मटेरियल को, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सको दूसरे कंट्रीज में भी थ्रू सी रूट. दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स had become very large and iron ore had to be imported from overseas. इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800 was what? Near rivers and the power supply. बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1800 टू 1950 क्या था? रेलवेज के पास, कोल फील्ड्स के पास. और बेस्ट लोकेशन सिंस 1950 आप देख सकते हो बाय शिप, यहाँ पर एक शिप पड़ी है, इस शिप के पास मीन्स यहाँ पे आपका सी पोर्ट है और यहाँ पे आप अपने इंडस्ट्रीज को सेट करना चाहते हो, सो दैट आप अपना प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सको. और इफ यू नीड सम रॉ मटेरियल यू कैन इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो दिस डायग्राम शोज चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. India iron and steel industry has developed taking advantages of raw material, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro are situated in a region that spreads over 4 states. West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka. Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are other important steel centers utilizing local resources. India's steel production increased from 1 million ton in 1947 to 30 million tons in 2002. Once again, I just want to say, please learn the region's name properly. World major iron ore producing areas you can see in this map, and you can learn through the PDF. Jamshedpur, before 1947, there was only one iron and steel plant in the country, Tata Iron and Steel Company Limited. It was privately owned. Private sector you can say. Still now it is a private. After independence, government took the initiative and set up several iron and steel plants. TISCO was started in 1907 at Sakchi near the confluence of the rivers Subarnrekha and Kharkai in Jharkhand. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel centers in the country. Sakchi was chosen to set the steel plant for several reasons. This place was only 32 km away from Kalimati station on the Bengal-Nagpur railway line. It was close to the iron ore, coal and manganese deposits as well as to Kolkata, which provided a large market. TISCO gets coal from Jharia coalfields and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. In Jamshedpur, several other industrial plants were set up after TISCO. They produce chemicals, locomotive parts, agriculture equipments, machinery, tin plate, cable and wire. Short note can come on this, that why Tata Iron and Steel Industry was established in Jamshedpur. So you can write, because of the availability of the raw materials, it was established over there, and then you can write the name of the raw materials and all the geographical factors. It is also situated there because it is closer to Kolkata, and Kolkata at that time was the biggest market, has the biggest market. Development of iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industries depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary producers, rolling mills, and ancillary industries. Okay, so I don't think here is something specified I need to go through. Development of iron and steel industry had opened the doors for other industries also. Just because of iron and steel industry, basic infrastructure sector has improved, steel industry has improved,
So large number of such industries, in steel industry or basic infrastructure industries also set up in market. Pittsburgh. As we discussed Jamshedpur, now we are going to learn about Pittsburgh. It's an important steel city of the United States of America. Steel industry at Pittsburgh enjoys locational advantages. Some of the raw materials such as coal is available locally, while the iron ore comes from iron mines at Minnesota, about 1500 kilometers from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply, the famous Great Lakes waterways. Trains carry the ore from Great Lakes to the Pittsburgh area. Ohio, Monongahela, and Allegheny rivers provide adequate water supply. So Pittsburgh is also important, you can say, industrial region of steel industry. Okay, because of the availability of coal. Coal is a raw material for generating powers. Today we can see very few mills or industries in the Pittsburgh. They are located in the valley of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. Land is the main and water because of the availability of these two main rivers. Pittsburgh area has many factories other than steel mills. These use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipments, heavy machineries, and rails. Today, very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. जो फाइनल आपका स्टील है वो लैंड और वाटर रूट्स के थ्रू आज भी ट्रांसपोर्ट होता है, बट हाँ आज बहुत कम इंडस्ट्रीज हमें दिखती है या स्टील मिल्स दिखती है पिट्सबर्ग में. पिट्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स. आज पिट्सबर्ग में ज्यादा फैक्ट्रीज है, स्टील मिल्स कम हो गई है. These use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machineries, and rail. Cotton and textile industry. Weaving cloth from yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. The textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. Fibers are the raw material of textile industry. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen, and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic, and rayon. Cotton textile industry is one of the oldest industries in the world because at that time there was no such technology so that you can produce artificial types of clothes like artificial fibers like nylon and polyester. That's why cotton textile is the oldest textile industry in the world. Till industrial revolution in 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms. In 18th century, power looms had facilitated the development of cotton textile industry, first in Great Britain and later in parts of the world. Today, India, China, Japan, and USA are also important producers of cotton textiles. You can see major cotton textile manufacturing region in the map also. Now we are going to discuss about some other industries. The most successful cotton textile industries we can see near Mumbai. It was established in Mumbai in 1854. Why? Because of the availability of geographical factors, favorable geographical factors, warm, moist climate, port for importing machinery, availability of raw material, skilled labor resulted in rapid expansion of industry in the region. Initially, this industry flourished in the state of Maharashtra and Gujarat because of favorable humid climate. But today, humidity can be created artificially also. We have such a modern and advanced technology. And raw cotton is a pure and not weight losing raw material. So this industry has spread to other parts of India. Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Pondicherry, and Panipat are some of other important centers. IT sector image you can see like this. We can see in the call centers. You can see such kind of a scene in the call centers and the customer care centers. This image basically shows the IT sector as I told you. IT sector, some software companies in United States of America and in Bangalore, India have joined hands to achieve this.
There are many ways in which this form of shift work across oceans. You are sitting in India, but you are dealing with the customers or the clients from different parts of the world, right? For example, two software professionals, Danny in Silicon Valley, California, and Smitha in Bangalore, are working on a joint project. While Smitha in Bangalore sleeps, Danny in California is working. At the end of his work day, he sends a message to Smitha, updating his progress. When she arrives at work in Bangalore, a couple of hours later, she notices that a message awaits her. She gets to work on the project straight away. By the end of her workday, she relays the results of her efforts back to California. By the way they communicate and work together, it is as if they were sitting in adjoining offices. So here is a small example. They are telling two software professionals, Denny in Silicon Valley uh, of California and Smitha from Bangalore. They both are working on the same project. Okay. When Danny is sleeping, Smita is working. Means Danny, there's a night in California and day in a day here in Bangalore. So they works in the shifts. So when Smita finishes her work, then it has to start. Information technology industries deals in the storage, processing, and distribution of information. Today, this industry has become global. This is due to a series of technological, political, and socio-economic events. Main factors guiding the location of these industries are resource availability, cost, and infrastructure. Major hubs of IT industries are Silicon Valley, California, and Bangalore of India. So why Bangalore only? Bangalore has largest number of educational institutions and IT colleges in India. City was considered dust-free with low rents and cost of living. State government of Karnataka was first to announce IT policy in 1992. So these are the three major reasons. That's why we can see large number of IT industries or IT sectors in Bangalore, and that's why it is also known as Silicon Valley. Good access to markets and skilled workforce, close to some of most advanced scientific and technological centers in world, pleasant climate with an attractive and clean environment, plenty of space for development and future expansion, located close to major roads and airports. Now, New Delhi, Hyderabad and Chennai, other cities such as Gurugram, Pune, Thiruvananthapuram, Kochi and Chandigarh are also important centers of IT industry. However, Bangalore has always had a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent. Here is one interesting fact for you. Being Bangalore means to lose one's job to someone in the city of Bangalore. Few years ago, many IT jobs in USA were outsourced to countries like India, where equally skilled labor was available at lower salary. अब बहुत सारे आईटी सेक्टर्स यूएसए में लोगों ने जॉब छोड़ दी थी, काम नहीं था उन लोगों के पास, बट इंडिया में था क्योंकि वो लोग लो सैलरी में भी काम करने को रेडी थे, बिकॉज वी नीड वर्क. Here I am done with my chapter. Hope you learned and enjoyed. If there is any query, please contact me through the feedback form or through the comment box. Thank you so much for your patience. Thank you so much for your time. If you like my channel, please click on the like button and subscribe it for more videos. Once the graded series is done, we are going to start grade 9. Okay. Thank you so much. Have a nice day.